So the chief guest of today's event, Minister of State Tribal Affairs, Srimati Renuka Singh Sarutha, MP Araku, Srimati Kalavati Garu, MLA Palakonda, Shri Asit Gopit Singh Meena, Economic Advisor, Shri Rabin Turu, Chairman EMRS West Bengal, Tribal Advisory Council West Bengal, Minister of State Tribal Affairs, Srimati Renuka Singh. And we have other dignitaries too. We have where AP, Mrs. Prabhakar Reddy, Vice Chairman and Managing Director. We have a big round of applause to all the dignitaries on this National Sports Meet 2022. Vaishali Edana Manundam Gada. So a beautiful event, 3rd EMRS National Sports Meet 2022. Manam on this fantastic occasion, please. Yes, and ee occasion to paatu lamp lighting to paatu manaki oka prarthana geetamto ee కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించడానికి we have Srimati Srilata and team APTWRS Mailavaram. We request them onto the dais for the prayer song. Yeah. So it's going to be a very special moment for each one of us amidst so many students, amidst so many players across the country. Yeah. Lovely. So we request all of you. Whole India is here. ఎలా ఉందంటే మొత్తం ఇండియా అంతా మన దగ్గరికే వచ్చేసింది, మన ఏపీకే వచ్చినట్టుంది. So happy, and yes, we'll continue with the prayer song. శుభం గురుత్వం కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధన సంపద. శుభం గురుత్వం కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధన సంపద. శత్రుబుద్ధి వినాశాయ దీపజ్యోతి నమోస్తుతే. దీపజ్యోతి నమోస్తుతే. శుభం గురుత్వం కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధన సంపద. శుభం గురుత్వం కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధన సంపద. మలయజ శీతలాం సస్యశ్యామలాం మాతరం వందే మాతరం. శుభ్రజ్యోత్స్న పులకితయామినీ పుల్లకుసుమిత ద్రుమదల శోభినీ సుహాసినీ సుమధుర భాషినీ సుఖదాం వరదాం మాతరం వందే మాతరం. వందే మాతరం. Thank you so much. An autonomous organization established under Ministry of Tribal Affairs deem it an immense pleasure to cordially welcome you all to the official opening and inaugural ceremony of the 3rd EMRS National Sports Meet hosted at Andhra Pradesh. This meet is very special, very special, because we are meeting after a gap of 2 years due to COVID-19. I am honored to share that Ministry has been organizing EMRS Sports Meet and Cultural Fest each year, holding great significance in unifying all the states and UTs, which is quintessential for human interaction and exchange. This week-long sports meet will echo the resolute spirit and emotions of our EMRS students who are filled with boundless zeal and enthusiasm to perform, cheering a common interest and goal. The tagline of the sports meet conveys a larger message for students to imbibe, to explore their talents, challenge capabilities, and achieve dreams. Dreams that are bigger than fears, filled with action and without any limits. I would like to take this opportunity to formally and heartily welcome our Honorable Chief Guest, Srimati Renuka Singh Ji, Honorable Minister of State of Tribal Affairs, whose presence today shall be a great motivation for our participating students, influencing their strength and vitality manifold. I also take this opportunity to formally welcome
Pedika Rajana Doraji, Tribal Affairs Minister and Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh. Warm welcome is also extended to Srimati G. Madhavi, Honorable Member of Parliament. Heartfelt welcome is extended to Srimati Kalavati Garu, MLA from Palakonda, Andhra Pradesh, for her presence and for unbound support lent in hosting the event at Andhra Pradesh. Welcome to Shri Rabin Tuduji, Chairperson, EMRS, West Bengal, Shri Vaibhav Sharan Tuduji, Member, Tribes Advisory Council, West Bengal. In addition to all other esteemed guests from the Ministry of Tribal Affairs, Shri Shiv Singh Meenaji, Nest, EMRS Societies, I also welcome MS Jahanvi, Director, AP Tribal Affairs Department. I wish to express deep gratitude for having enhanced the grandeur of this ceremony with their presence to all those who are present here. Exhibiting the spirit of Khelo India, which is a national game for development of sports, EMRS National Sports Meet inculcates a strong spirit of participation in sports among students that we believe will go in a long way in showcasing the tremendous potential of our EMRS students. Today we have participants from 22 states, around 4,000 students are participating, and there are 22 events also, 7 team events and 15 individual events, including athletics and swimming, which have numerous events within them. In this such a sports mega event, I must remind you all of one thing, that is sportsman spirit. Participating and winning is important, but more important is sportsman spirit. Learning to accept defeat with grace and in a sportsman-like manner. Best of luck to all of you. I think this 5-day event will bring out the greatest potential among all of you. This is an event which unifies the nation. It creates among them a sense of unity. You get to know fellows from each and every part of the country. So it inculcates a sense of national unity also. Let me tell you one thing, that sports has also played a role in our national freedom struggle. When our players of Mohun Bagan defeated an English club, an English army club in football match, that electrified the nation and added to the struggle, our national struggle against the British. So sports is a great unifying factor and brings out a sense of national pride, national unity. Best of luck to all of you, and once again, hearty welcome to all our guests and participants. Thank you. Sportsmanship हर बंदे में, हर प्लेयर में कितना जरूरी है, सर ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया. Thank you so much. And we have more than 4,000 students over here. Yes, so thank you so much, sir, for your very valuable words. And Jata garu kuda manto paatu unnaru. She is handing over the flower bouquet to. And we have our principal, Mailavaram Shobha Garu. And we request Sujata Garu to welcome our dignitaries with the bouquet. Ramadevi garu ippudu mana dignitary ki bouquet istunnaru. Ramadevi garu, thank you so much. पे सब आए हैं 22 स्टेट से, डिफरेंट बच्चे, डिफरेंट प्लेयर्स. The next 5 days is going to be a super hit one because all the students across different states are going to. जोरदार तालियां से एक बार सारे बच्चे एक साथ. क्या बात है. Yes, wonderful. Can we have a big round of applause, guys? Lovely. So मार्च पास्ट अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. मार्च पास्ट में सारे बच्चे जो भी आ रहे हैं यहाँ पे एंट्री के पास ग्रुप फॉर्म होगा. सैल्यूट कर सकते हो और यू कैन डिस्पर्स फ्रॉम हियर. एंट्री से एग्जिट पॉइंट तक, दैट इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, आप सभी सैल्यूट मोड में ही रहोगे. ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज मेक श्योर यू आर इन द सैल्यूट मोड फ्रॉम
national flag. So let's welcome the Andhra Pradesh girls. So let's all welcome them with a big round of applause. First color party Andhra Pradesh, followed by Arunachal Pradesh. Now we have the beautiful girls in white sarees, Andhra Pradesh girls. Yes, representing Andhra Pradesh, we have very beautiful girls in our traditional attire sarees. Yes. So आंध्र प्रदेश गर्ल्स बहुत ही खूबसूरत नज़ारे से देख पा रहे हैं. सब सैल्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स योर राइट. प्लीज सैल्यूट टुवर्ड्स योर राइट. एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबको देख के आंध्र प्रदेश में थर्ड नेशनल स्पोर्ट्स मीट होना और आंध्र प्रदेश के बच्चे ट्रेडिशनल अटायर में क्या खूबसूरत नजराना है ये. क्या बात है. So beautiful in white sarees. Thank you so much, Andhra Pradesh girls. And coming to you, we have Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh, Northeast Arunachal Pradesh has always been our favorite state from India. और सारे बच्चे लड़के और लड़कियां क्या बात है, सब बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे हो और आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर द नेशनल स्पोर्ट्स मीट जो कल से शुरू होने जा रहा है. एंड एक बार अरुणाचल प्रदेश के लिए जोरदार तालियां हो जाए. Lovely. So wish you all the best, Arunachal Pradesh. And now we have Chhattisgarh in front of us. So let's welcome Chhattisgarh students with a big round of applause. Chhattisgarh, the boys and girls in black. कितना अच्छा नजारा है ये भी. सारे बच्चे स्पोर्ट्समैनशिप के साथ चल रहे हैं और we love your attitude and grace. Yes, and we welcome Chhattisgarh to 3rd EMRS National Sports Meet 2022. And such a beautiful combination they were. Yeah, Right? exactly. We have black and pink. Thank you so much, Chhattisgarh. Next we have Ladies and gentlemen, join your hands and let's Daman and Blue से बच्चे आए हैं आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में to present their sports skills. तो सारे बच्चे नेवी ब्लू और ब्लू कलर के combination में में. And hearty welcome. Congratulations. Wish you all the best, guys. next we have it as the state Gujarat. तो गुजरात के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. So let's welcome Gujarat. And again with a lovely combination white and blue. White and blue is So representing Gujarat, we have such a lovely kids over here. All the best to all the students of Gujarat. yeah. So गुजरात मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लड़के और लड़कियां. क्या बात है. Yes, and we बहुत have youth confident. member also, Likita. Exactly. बहुत कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं सारे बच्चे. And there are so many sports lovers and sports people in Gujarat. With a big round of applause, let's welcome Himachal Pradesh. The state Himachal Pradesh. So हिमाचल प्रदेश के संबंधित जो ड्रेस अटायर होता है, हमारी लीडर द कैप्टन ऑफ द टीम वो ब्यूटीफुल
right, Likita? Yes, definitely. Or all of you are bleeding blue. Come on, all the girls. Look at the girls out there. The beautiful girls in blue and yellow. The spectacular view indeed. And again, if you observe, we have so many girls. Exactly. It's more than boys. I can see the girls gang in the team Himachal Pradesh. So once again, that's a huge crowd. So सारे बच्चे जब एंट्री करेंगे, make sure you salute towards your right. Jharkhand, salute towards your right while you enter the dais near the stage. Jharkhand. Yes, so let's welcome now the state Jharkhand. Ecosystem को represent करते हुए in the light green attire Jharkhand और सारे बच्चे blue and white combination में हमारे साथ शामिल हुए हैं इस अद्भुत स्पोर्ट्स में, the National Sports Meet 2022 being conducted by Ekalavya Model Residential School. This is the state Jharkhand. Next we have with us the state Karnataka. So let's welcome Karnataka. Can we have a big round of applause, everyone? Lovely. The state Karnataka looks amazing. Karnataka के बच्चे सब blue और white combination में represent कर रहे हैं nice sports meet में. And we welcome Karnataka to 3rd EMRS National Sports Meet 2022 and wish you all the success. Lovely. So कर्नाटका स्टेट के गर्ल्स भी बहुत अच्छे नजराना में दिखाई दे रहे हैं. What a spectacular view altogether. And now, with a big round of applause, let's welcome state Kerala. The South Indian state Kerala. Lovely. And look at the girl. They have a beautiful combination of pink and blue. Pink and blue combination और बहुत young बच्चे हैं. तो देखा जाएगा कि कितने dedication के साथ ये लोग sports खेलेंगे कल से. And with this we came to know that how students are very much, they are interested in sports, right? Yes. So they give so much of importance to sports, so that's very nice. Thank you so much. And now let's welcome the state Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश स्टेट से बच्चे खूबसूरत अटायर में रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन. मध्य प्रदेश द मिडिल स्टेट ऑफ इंडिया एंड ग्रीन और व्हाइट कॉम्बिनेशन में बच्चे बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हैं. और ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज जो भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स में कल से. आप सबको हमारी तरफ से गुड लक. So wish you all the best, guys, Madhya Pradesh. And now
3rd EMRS National Sports Meet 2022. Can we have a big round of applause? So wish you all the best, Manipur girls and boys. Now, let's make some noise for the state Mizoram. So Mizoram अभी बहुत ही खूबसूरत स्टेट है फ्रॉम इंडिया. मिजोरम में 6 फंक्शनल EMRS है और टोटल EMRS being 17. 17 EMRS from the state Mizoram. And such a bright color combination there wins. They look so beautiful. Yeah, indeed, all the girls look very beautiful In red and yellow. तो रेड कॉम्बिनेशन में सारे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं. है ना? देखा जाएगा या तो देखा जाएगा कि लड़के और लड़कियां किस तरह से कल से पार्टिसिपेट करके गेम्स में जीतेंगे. हम सुपर एक्साइटेड है आप So सबको. wish you all the best, the Mizoram team. अगला स्टेट ओडिशा. And in the state Odisha, we have 27 functional EMRS. Gita, that's so proud and that's so great. 27 सच में बहुत ही प्राउड मोमेंट है. ओडिशा जैसे स्टेट में 27 फंक्शनल EMRS और ग्रैंड टोटल वी हैव 104 EMRS in Odisha, which is the highest. Yeah. Proud moment. AP welcomes you guys. Wish you all the best. Yes, and that was Odisha. And now, ladies and gentlemen, let's invite Rajasthan. So, in the state Rajasthan, we have 30 functional EMRS, Likita. Yes. And boys and girls of Rajasthan, wish you all the best. And you look so pretty and so cool in the color combination of orange and राजस्थान के बच्चे मुझे लगता है कि छोटे से बड़े इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. बहुत सारे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं. बहुत खूब और बहुत सारे बॉयज हैं. मुझे लगता है राजस्थान बहुत जोश के साथ खेलने जा रहा है कल से. और राजस्थान के बच्चे भी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं. देखा जाएगा कल से स्पोर्ट्स मीट में किस तरह का. definitely I hope they give the best. And congratulations, Rajasthan team. And now, let's invite State Sikkim. They look so vibrant. Exactly. Neon colors में क्या नजारा है. Super. And Nikita, we have 4 functional EMRS in Sikkim. Great. So Andhra Pradesh welcomes you, Sikkim team. So you give your best from tomorrow. Wish you all the best on behalf of 3rd EMRS National Sports Meet 2022. Yes, And orange. and now let's invite Tamil Nadu with a big round of applause. Tamil Nadu, the South Indian state, being our favorite state once again. Tamil Nadu के And we have 8 functional EMRS. So even they look so pretty in the combination of violet, white, and we have actually 2 to 3 colors in that, right? But they look so pretty. And I wish you all the best on behalf of 3rd EMRS National Sports Meet 2022. lovely. Tamil Nadu girls and boys, congratulations. बहुत बधाई आप सबको. बहुत सारी शुभकामनाएं भी हमारी तरफ And से. we request all the students, please look at your right. While you enter, please look at your right. Yeah. And please salute towards our stage, and then you can exit. Now, let's invite State Telangana with a big round of applause. The state Telangana, look at them, lovely. And in Telangana, we have 23 functional EMRS. Wow.
interest towards sports. So Telangana boys and girls, good luck to you all. Telangana state, the South Indian state, adjacent to the state Andhra Pradesh. They speak the language. And we wish you all the best. All the Telanganites, good luck to you. And now, with a big round of applause, let's invite Tripura. State Tripura. And in the state Tripura, we have 5 functional EMRS. The northeast state Tripura, bordered on the 3 sides by Bangladesh and home to a very diverse mix of tribal cultures and religious groups. We welcome all of you to the state of Andhra Pradesh. And we wish you all the best, state Tripura. And now, we would like to invite the state Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is a state in the northern India with over 200 million inhabitants, the most populated state in India, and we are very glad that all the girls and boys are all set. And we have 2 functional EMRS for Uttar Pradesh state. क्या बात है उत्तर प्रदेश के बच्चे तो And you look at the women, those who are representing Uttar Pradesh, she looks so pretty. she looks beautiful. Thank you all so much for coming here. And we wish you all the best on behalf of 30 MRS National Sports Meet 2022. Welcome to Andhra Pradesh. उत्तर प्रदेश से इतने सारे बच्चे स्पोर्ट्स मीट में पार्टिसिपेट करना सच में बहुत ही प्राउड मोमेंट होगा हम सबके लिए। और लड़कियां इतने सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सच में इट हैज क्रिएटेड अ हिस्ट्री एंड अ माइलस्टोन फॉर इंडिया। And now we would like to invite the state Uttarakhand. So please join your hands and let's invite Uttarakhand. Yet again, the northern India state crossed by the Himalayas. The major center for yoga study was made famous by the Beatles in Uttarakhand. And in Uttarakhand we have 3 functional EMRS. जहाँ से गंगा नदी बहती है वहाँ से बच्चे भी बहने आ गए आंध्र प्रदेश में। ये क्या खूबसूरत नजराना है, क्या बात है। Lovely, good luck to all of you girls. Proud Likita. Yes, There are so many sports lovers in Uttarakhand too. exactly. As AP is hosting this grand event, really we feel very proud. You know, we have so many states, so many students. Being Wish part you of all the this best. Yes. National Sports Meet is truly the best thing for the state like Andhra Pradesh. Third EMRS National Sports Meet 2022. Yes, and last but not least, we have an amazing state in front of us. So let's invite West Bengal. West Bengal. West Bengal. So we would like to invite you to 3rd MRS National Sports Meet 2022. And in West Bengal, we have 7 functional EMRS. Functional EMRS. That's a good number too. So West Bengal के बच्चे बहुत सारे शामिल हुए हमारे साथ। Eastern Indian states between Himalayas and Bay of Bengal. It retains all the architectural, cultural remnants apart from the sports culture. We welcome you all to the 3rd EMRS National Sports Meet 2022. And once again, proudly Welcoming Andhra Pradesh students. Everybody make some noise.
National Sports Meet 2022. And Likita, we have 28 functional EMRS in our Andhra Pradesh. Wow, that's truly a great number. We congratulate all the Andhra Pradesh sports people for coming up with so many functional EMRS. Yes, and Andhra Pradesh students వాళ్ళందరికీ బాయ్స్ కి గర్ల్స్ కి అందరికీ కూడా once again hearty welcome and congratulations guys, wish you all the best. సో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ చాలా మంది స్పోర్ట్స్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడికి విచ్చేశారు. అండ్ వీ హ్యావ్ కిడ్స్ ఆల్సో. యా, లాట్ ఆఫ్ కిడ్స్. చాలా మంది పిల్లలు పాలు పంచుకోవడం ఇంత అద్భుతమైన ఈవెంట్ లో చాలా గర్వకారణమైన విషయం. సో మీ అందరికీ కూడా థర్డ్ ఎంఆర్ఎస్ నేషనల్ స్పోర్ట్స్ మీట్ 2022 తరఫు నుంచి విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. So 22 states, 22 स्टेट हमारे सामने, अलग अलग देशों से अलग अलग बच्चे हमारे साथ एक ब्यूटीफुल इवेंट में पार्टिसिपेट करना बहुत ही खूबसूरत नजराना। बर्ड EMRS नेशनल स्पोर्ट्स मीट के लोगों के बारे में आप सब अभी तक जान लिए होंगे। लोगों में 3 मोटो हम प्रकट कर रहे हैं, जैसे एक्सप्लोर योर टैलेंट, चैलेंज योर कैपेबिलिटीज, अचीव योर ड्रीम्स। तो अगर आप लोगों की तरफ देखते हो तो लोगों में एक बंदा टॉर्च पकड़ के खड़ा है, रिप्रेजेंटिंग द इकोसिस्टम विच इज द ट्राइबल कल्चर। सो इस ट्राइबल कल्चर के बारे में हम स्टार्टिंग से बात करते जा रहे हैं और ट्राइबल कल्चर के संबंधित जो भी बच्चे 22 स्टेट से हमारे सामने मौजूद है, बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए, बिकॉज लोगों के हिसाब से जो मैस्कट द ब्लैक बक, Yes, and definitely we need to talk about that because black buck is the state animal of Andhra Pradesh. Black buck is a symbol of purity, prosperity and peace. And according to Hindu mythology, the black buck draws the chariot of Lord Krishna. And the black buck has associations with the Indian culture. Tribes such as the Bishnois revere and care for most animals including the black buck. या सो ब्लैक बग जो कि मैस्कट है इस थर्ड EMRS नेशनल स्पोर्ट्स मीट का, तो बहुत ही खुशनसीब है हम कि इतने अच्छे मोटो के साथ, इतने अच्छे एम के साथ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। So let's all hope for the best and hearty congratulations to all the students out here. बात है, लुक एट देम। स्टार्टिंग से जब से हम लोग आए तब से ये नॉन स्टॉप हमारे लिए इतने अच्छे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ बजाते हुए, मुझे लगता है बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन जिस तरह से ये
स्टार्टिंग से करते जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनने के लिए और देखने के लिए भी। So interesting also. I think they deserve a big round of applause. Can we have a big round of applause, everybody? सारे बच्चे ड्रम्स के साथ अभी अपना टैलेंट पेश करने जा रहे हैं। Move forward with our next session. Thank you so much. Thanks to our band people. Nirshima Kardavindi, thank you. And now we request our Chief Guest Minister of State Tribal Affairs Srimati Renuka Singh Sarutha ji to come forward and light this sports torch. So sports torch lighting के लिए हम अभी रेणुका सिंह मैडम को सामने बुलाना चाहते हैं। And we request Purna Malawat also to join with them. And we have Purna Malawat honored us. तो फिर एक बार मिनिस्टर ऑफ स्टेट ट्राइबल अफेयर्स श्रीमती रेणुका सिंह जी, हम आपको टॉर्च लाइटिंग के लिए स्वागत करते हैं आपके हाथों से और पूर्णा के हाथों से टॉर्च लाइटिंग स्टार्ट किया जाए। जोरदार तालियों के बीच Can we have a big round of applause, everyone? All the students, come on. क्या बात है, टॉर्च अभी लाइट हो चुका है और सारे बच्चे अभी स्पेक्टेकुलर व्यू। ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट ऑल टुगेदर। Come on, guys. बच्चों का जोर सुनाई नहीं दे रहा है, तालियां बजा How रहे excited हैं। are you? How happy are you? Come on. Wow. तो हमने स्टार्टिंग से लोगो और मैस्केट के बारे में हम बात करते जा रहे हैं। स्पोर्ट्स मीट्स लाइक दिस। Exactly. So I request everyone kindly join your hands. And we request our chief guest to declare the sports meet open. అంతా ముందుకు వచ్చి నిల్చోవాలండి, దీని తర్వాత ఓత్ టేకింగ్ ఉండబోతుంది। I declare the third EMS National Games and Sports Meet for the year 2022 and 23 organized by APTWRE Society are open. Wow. Come on, everyone, join your hands. So our sports meet has opened. क्या बात है, क्या हो जाओ, कल से इस अद्भुत 5 डेज स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करके लॉरेल्स जीतेगा हमारे। Just go back 2 steps. Yeah. ఒక ఆదివాసీ ప్రపంచంలో ఒక గిరిజన మహిళగా ఇటువంటి ఈవెంట్లో ప్రారంభోత్సవానికి రావడం, మీ అందరితో కలిసి పాల్పంచుకొని ఈ కార్యక్రమానికి ప్రారంభించడానికి నాకు అవకాశం కలిగినందుకు నేను అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను। ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని మన ఈఎంఆర్ఎస్ నేషనల్ స్పోర్ట్స్ మీట్లో భాగంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఆతిథ్యం ఇవ్వడం చాలా గర్వంగా ఉంది। ఇటువంటి సమయంలో మనకి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన గౌరవనీయురాలు శ్రీమతి ట్రైబల్ మినిస్టర్ గారైన రేణుకా సింగ్ మేడం గారికి, అలాగే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గిరిజన శాఖ మార్చులు అయిన గౌరవనీయులు పీడికి రాజేందర్ గారికి, అలాగే ఎంపీ మాధవి గారికి,
అలాగే మన ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డైరెక్టర్ మేడం గారికి, అలాగే నేషనల్ వైడ్ నుంచి వచ్చేసిన ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ సభ్యులకు, మెంబర్స్ ఆఫ్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ మెంబర్స్కు, అధికారులందరికీ, ఇక్కడికి విచ్చేసిన మన భారతదేశంలో ఉండే అన్ని రాష్ట్రాల నుండి వచ్చిన ఆదివాసీ విద్యార్థులకు, అలాగే అక్కడ నిర్వహిస్తున్న ప్రిన్సిపాల్ వారికి, పిల్లల్ని ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దిన ఉపాధ్యాయులకు, వ్యాయామ ఉపాధ్యాయులకు, సిబ్బంది అందరికీ కూడా, అలాగే డిగ్నిటరీస్గా వచ్చిన అధికారులందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమం మన రాష్ట్రంలో జరగడం, మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం సహాయంతో ఈ ఏకలవ్య స్కూళ్ళు మన గిరిజన బిడ్డల కోసం ఉన్నతంగా అత్యున్నత ప్రమాణాలతో విద్యను అభ్యసించడం, దాంతోపాటు మరి స్పోర్ట్స్ విషయంలో కానీ, గేమ్స్ విషయంలో కానీ, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్లో కానీ మరి గిరిజన ఆదివాసీ బిడ్డలు ఎంతో ఈ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల్ని కాపాడే విధంగా ముందుకు తీసుకువెళ్ళడం, ఈరోజు ఈ స్పోర్ట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన ప్రతి ఒక్క విద్యార్థులందరికీ కూడా, మరి అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి విచ్చేసిన వారందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. I wish you all the best and good luck everybody in your lives, a very successful life. God bless you. All the best to all of you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Made 2022, respecting the rules and regulations. We swear that. Go back, flag bearers. About 10. We swear that we will take part in the 3rd EMRS National Sports Meet, respecting the regulations which govern them, and with the desire to participate in the true spirit of sportsmanship for the honor of our organization and for the glory of sports. Jai Hind. Team ready ఉండండి. గౌరవనీయులైన మన మంత్రివర్యులు రేణియా సింగ్ గారికి, అలాగే మన ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పీడిక రాజనదొర గారికి, మా ఎమ్మెల్యే పాలకొండ కలవతమ్మ గారికి, అలాగే వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ, ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన విద్యార్థులకు, పీఈటీలకు, అలాగే అధికారులందరికీ కూడా, అలాగే మీడియా సోదరులకి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలుసుకుంటున్నాను. అలాగే a warm good evening to all my tribal students representing all our nation, India. Very warm welcome to you all, and I wish you very all the best. I would like to share some words in front of you. Students, I am very happy see the hosting of 3rd Eklavya Model Residential Schools National Sports Meet 2022 at the Andhra Pradesh state. To the young players like you, I can tell you only one thing, that is either you win the match or you lose the match. Remember one thing, your participation is mandatory in every match. And I would like to share my personal feeling to this. You can take me as a live example. Being a woman from tribal community, from my childhood, I took every chance and opportunity as participation, and I participated in every sports meet from the school level and state levels. In many sports meet, I got medals too, and I also worked as a physical education teacher. And also, I also take so many students like you, so many sports meet. I remember all my students from my Andhra state, and also now present with all blessings of my state tribal people and Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu. Now I am a
Member of Parliament representing state of Andhra, and I am only youngest MP in this 17th Lok Sabha, with all our tribal people blessings and the students from your side. I would like to congratulate all the students. I'm also very happy to see all the students here representing all EMR schools and all tribal students. I'm very happy and wish you all the best, and don't lose your hope and participate every event with great courage, and sports gives us lot of support. We can go everywhere and anywhere, we can get success. That is the spirit of sports person. I wish you all the best, and congratulations and welcomes to the Andhra Pradesh. Thank you very much. Participants, please. And we have our principal Samuel Job. Thank you so much, sir. మాకు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చూపించారు. కాదు, ఇంత బాగా డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసి ఎంటర్టైన్ చేస్తే మీరు అందరూ అలా చప్పట్లు కొట్టకుండా కామ్గా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? కెన్ వీ హ్యావ్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్? Yes. Come on, guys. You guys are so energetic. You guys are so young. You are a sports persons. Wow. Everybody, please sit down. Good evening to everybody.
Honorable Chief Guest, Srimati Renuka Singh Saudhari, Honorable State Minister for Tribal Affairs, Government of India, and Honorable MP Madhavi and Honorable MLA Kalavati, and Sri Ashish Gopalji, Commissioner, and Sri Sivasingh Mehra, Economic Advisor, Mota, and Sri Robin Thoda, Chairman EMRS, West Bengal, Srimati Bhai Baba Saran Thoda, Member TAC, and Mrs. Jahnavi, Director Tribal Welfare, and Sri Ravindra Babu, Additional Director Tribal Welfare, and all dignitaries, print media, electronic media, all are welcome. All the participants from 22 states and mentors, coaches, all dignitaries and officials. On behalf of Andhra Pradesh government, it is a great honor to us that EMRS National Sports Meet 222 is hosted by Andhra Pradesh. We are very happy that all the Academia students are brought together for sports meet here. In the occasion, I would like to say something about our state and the commitment of our Honorable Chief Minister, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, for the tribal welfare and tribal development. So I would like to say a few lines. This is sports. Hence our government taken steps to open 5 sports schools in Andhra Pradesh and Srikakulam, Vijayanagaram, Prakasam, Karnoolu, Anantapur district to get trained well by all tribal students to participate in any state, international or national. As thus, our Honorable Chief Minister has given 2 districts for tribal people, Alluri Sitaramajaya district and Bharatpanam Manyam district. Thus, the Honorable Chief Minister Jagan Mohan Reddy Garu is very loud, the tribal one. I like our Prime Minister Modi ji and our Tribal Welfare Minister Sri Arjuna Munda ji. Like this, our Honorable Chief Minister Jagan Mohan Reddy Garu is sponsored several schemes for tribal welfare for the benefit of the tribes. The population of the tribe is 27.39 Andhra Pradesh, but our Chief Minister has given 30,273 crores for 52,84,522. And more than our population, our Chief Minister is giving direct beneficiary to all tribals in the state. Thus he is helping very lot the poor and needy tribal in Andhra Pradesh. Regarding to education, our Chief Minister of Andhra Pradesh sponsored specially 6 schemes. Jagananna Vidya Kanuka, 3,04,609 students are getting Vidya Kanuka through Tribal Welfare Department. The expenditure is 1,52 crores rupees spent by Tribal Welfare Department under the scheme of Vidya Kanuka. Jagananna Amma Bodi,
Jagannath Mobadi is another scheme for the tribal students. 2,86,379 tribal students are benefited. 1,272.52 crores rupees are spent under Amabadi scheme. For each mother has taken 15,000 rupees per every year, first class to intermediate class. And thus, Vasudha Divina, the students, the tribal students who are studying in hostels are getting 10,000 to 20,000 as per their academic qualification. Now, 63,392 students are getting Vasudha Divina scheme. Thus, 106,000 rupees are spent for this scheme. Vidya Divina, 96 and 991,000 students are get 243 crore rupees is spent. Full fees reimbursement for any educational qualifications, either political, politics, or engineering, medicine, any graduate or postgraduate students. The full fees reimbursed by the government of Andhra Pradesh from all tribal students. Either like Jagannath Goramudda. Jagannath Goramudda is midday meals. 3,84,745 students are enjoying getting the midday meals, for which 271 crores rupees is spent by the government of Andhra Pradesh. Thus, 2,49,000 rupees are spent by the government of Andhra Pradesh for tribal students. Thus, our government of Andhra Pradesh is committed for the development and welfare schemes of the tribals. Like this, RYFR quotas. RYFR quotas is also giving 250,000 tribals, 250,000 acres for 1,50,000 tribal families by the government of Andhra Pradesh under leadership of our Minister, Chief Minister, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu. In Andhra Pradesh, there are 379 ashram schools, 18 pre-matric schools, pre-matric hostels, 163 post-matric hostels, 81 hostel converted residential schools, in 1953 government primary schools. Totally, the strength is 1,72,278 students. Like this, 171 resident schools with students of 53.11 students. Like now, 28 EMR schools are in Andhra Pradesh with 7,830 students. The students of EMR schools are really model to Indian education system. Their activities, their sportsmanship, their dancing, and everything is role model to the Indian education system. Tribals are trying to getting heights, very heights too, other than the students also. The tribals in Andhra Pradesh, for the tribals in Andhra Pradesh, we are building museum at Tajangi village in Lambasingi, Sintapalli Mandalam, with a 35 crores cost, with the support of the government of India. And also we spent National Tribal Dance Festival in Andhra Pradesh on June 10th to 12 in this year. The tribal party has also spent
in the Andhra Pradesh 15th November to 22nd November in Andhra Pradesh. Thus, every program which is sponsored by or advised by the Government of India under the leadership of the Honorable Prime Minister is, the Andhra Pradesh government is organizing in Andhra Pradesh and getting the support of the Government of India. All the tribal participants in the game, I request, be friendly in the sports and be positive. The win and lose are common. The win and lose are common. But you should be positive and be patient. Don't try to quarrel with the another group who won, who lose. But all are equal in the games, and you try to win. But the losers may get another time. The losers may get another time. Failures are stepping stone for your success. You try till your success. Don't forget. In the same time, I want to inform the message sent by our Honorable Chief Minister Jagan Mohan Reddy Garu regarding to participants from 22 tribal states. Please hear. The tribes living simple with pure heart are my family members. Andhra Pradesh government committed to empower tribal communities to reach their goals and achieve new heights. The government is always helping. The government is always helping them by implementing Navaratna scheme and subplan and tribal subplan. My best wishes to the players, coaches, officials, dignitaries, EMR School, National Sports Meet 2022. I hope the sports meet will be grand success. Sri Y. Jagan Mohan Reddy Garu, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh. Kindly be friendly. All the participants came from 22 states. Win or lose are common. So, the Andhra Pradesh officials and all also requested to give all supports to all students and mentors, coaches, officials from 22 states who came to here. Thus, I am coming to conclusion with a final request. I am very happy visiting the Tribal National Sports Meets, our Honorable Minister Sri Renu Singh ji and other officials and on the dais and off the dais. Please cooperate us and see the sports meet will be grand success. So I thank one and all. Tappakunda sir, this is definitely going to be a grand success. भारत माता की, भारत माता की। दो लाइन आपको समर्पित करते हुए अपनी बातों की शुरुआत करूंगी। शब्दों को भी शमशीर बना सकते हैं हम, शब्दों को भी शमशीर बना सकते हैं हम, पानी पर भी तस्वीर बना सकते हैं हम। तकदीर की कोई बात न करे हमसे, क्योंकि तकदीर की भी तकदीर बना सकते हैं हम, क्योंकि तकदीर की भी तकदीर बना सकते हैं हम। और इसी तकदीर की तकदीर बनाने के लिए
भारत देश के विभिन्न राज्यों से इक्कीस प्रकार के खेलों में अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए कृष्णा नदी के तट पर मां दुर्गा के प्रांगण में जनजाति समुदाय के बेटे बेटियां 4 दिवसीय खेल प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूं। अभी तो नवंबर में कर्नाटक के बेंगलुरु में एनुअल फंक्शन में आप सभी इकट्ठे हुए थे। आपको शुभकामनाएं देने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए, आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए मंच पर उपस्थित हैं आंध्र प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पी राजेंद्र दोरा जी, जिनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त हुआ। लोकसभा में हर सत्र में अपने क्षेत्र की समस्याओं को, जनजाति समुदाय की समस्याओं को और आंध्र प्रदेश के विकास के मुद्दों को समय समय पर ईमानदारी के साथ सदन में उठाने वाली सक्रिय सांसद बहन श्रीमती माधवी जी, पालकोड़ा विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक बहन कलावती जी, नेक्स्ट के कमिश्नर सम्मानीय असित गोपाल जी, जिनके नेतृत्व में ये भव्य आयोजन यहां पर होने जा रहा है, श्री शिव सिंह मीना जी, सुश्री जानवी जी, रविंद्र बाबू जी, श्री राबिन टूडू जी, श्रीमती बई बहाशरण टूडू जी, डॉक्टर दिनेश झा जी, 22 राज्यों के एकलव्य मॉडल स्कूल से आए हुए सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी खिलाड़ी बालक बालिकाएं, पत्रकार साथियों, खेल हम सबके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। खेल से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारे अंदर ऊर्जा और उत्साह बना रहता है। खेल के बहुत सारे फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, आप आदिवासी समुदाय के बच्चे और आदिवासी समुदाय अपनी संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति के साथ अपना जीवन यापन करता है।
तो बहुत जरूरी कि समय समय पर हम अपनी संस्कृति के रक्षा के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लें। एकलव्य मॉडल स्कूल के बच्चे प्रत्येक वर्ष देश के किसी राज्य में इकट्ठे होकर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि जब भी एनुअल फंक्शन हुआ मुझे वहां पर बच्चों के साथ शामिल होने का अवसर मिला। जब मैं जनजाति कार्य मंत्रालय की मंत्री बनी तो मुझे पहला अवसर मिलने जा रहा था मध्य प्रदेश के भोपाल में, जब टूर्नामेंट आयोजित होने हुआ, लेकिन बारिश की वजह से वो आयोजन उस दिन रद्द हुआ, मैं चूक गई। लेकिन मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि कोरोना के बाद दूसरी बार आप सबके साथ ये मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ लगातार 4 दिनों तक विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन होगा। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप बचपन से ही स्पोर्ट्समैन होते हैं। अब मैं सिक्किम के बेटे बेटियों के लिए क्या कहूँ, मैं सिक्किम गई थी, सिक्किम के बच्चे यहाँ होंगे तो आप सुनो, मैं पूरे देश में घूमती हूँ, अपने समाज के लोगों से मिलती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो विकास कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षाओं के लिए भी हम जाते हैं। लेकिन सिक्किम जाकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सिक्किम को स्वर्ग कहती हूँ और सिक्किम में तो मैदान ही नहीं है, केवल पहाड़ी ही पहाड़ी है। तो हमारे बच्चे जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं, पहाड़ से नीचे उतरते हैं, तो इससे आपका खूब अभ्यास हो जाता है। आप वहीं से यानी बचपन से ही स्पोर्ट्स की शुरुआत हो जाती है। आज मैं देख रही थी जब आपका फ्लैग मार्च हो रहा था, केवल आसाम और नागालैंड ये 2 राज्य के खिलाड़ी यहां पर नहीं पहुंचे। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, ऐसे सभी जो 7 सिस्टर राज्य है जहां पर सिर्फ पहाड़ी ही पहाड़ी है और बहुत ठंडी भी है, ऐसे राज्यों के खिलाड़ी यहां पर हैं। आप सबको पहाड़ पर चढ़ने और उतरने का और ठंड मौसम में रहने का जो आदत है, आप बचपन से ही एक खिलाड़ी के रूप में तैयार होते हैं। आपका शरीर बहुत मजबूत हो जाता है। मैं देख रही थी दक्षिण राज्य के 5 राज्य, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, 5 राज्य के यहाँ खिलाड़ी पहुंचे। इसके साथ साथ जो मध्य भारत है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ऐसे अनेक राज्य के खिलाड़ी यहां पहुंचे हैं। आप सब अनुभव कर रहे होंगे कि आजकल खेलों को लेकर पूरे देश में एक जश्न का माहौल बना हुआ, क्योंकि जब ओलंपिक हुआ तो बहुत सारे हमारे बच्चे
स्वर्ण पदक जीतकर आए, उन्होंने रजत जीता, कांस्य पदक जीता। इसी तरह से जब कॉमनवेल्थ हुआ, कॉमनवेल्थ में भी कई मेडल हमारे नौजवानों ने जीत कर लाया। और ये वातावरण क्यों बना, इसके पीछे भारत सरकार की, राज्य सरकार की मेहनत छुपी हुई है। आपने देखा होगा जब ओलंपिक हो रहा था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री न केवल विकास की बात ही करते हैं, न केवल देश की रक्षा की बात करते हैं, बल्कि जब इस प्रकार के गेम होते हैं तो खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए भी बात करते हैं। जीतने वाले से भी बात करते हैं, जो हार जाते हैं हारने वाले नौजवान से भी बात करते हैं। मैं आप सबको कहूंगी, एक समय था जब फिल्म के हीरो को, फिल्मी दुनिया के हीरो को लोग अपना सेलिब्रिटी मानते थे, उसके पीछे भागते थे। लेकिन आज देश का वातावरण बदला है। आज का युवक विश्वनाथ आनंद को अपना सेलिब्रिटी मानता है, क्योंकि वो विश्व चैंपियन है शतरंज में। नीरज चोपड़ा को अपना सेलिब्रिटी मानता है, क्योंकि वो जब टोक्यो में वर्ल्ड कप चल रहा, ओलंपिक हो रहा था, तो वो स्वर्ण पदक लाता है। हमारी बेटियां अपना सेलिब्रिटी मानती है साइना नेहवाल को, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों में वो 3 गोल्ड मेडल लेकर आती है। हमारे देश के नौजवान अभिनव बिंद्रा को अपना सेलिब्रिटी मानते हैं, क्योंकि निशानेबाजी में वो स्वर्ण पदक लेकर आता है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, मैं जिस वातावरण की बात कह रही हूं, केवल सरकारी नौकरी से ही कैरियर नहीं बनाना है, आपको खेलों में भी अपना कैरियर बनाना है। जहां माधवी बहन और हम बैठते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा में हमारे देश का एक सक्सेस क्रिकेटर गौतम गंभीर भी बैठता है। गौतम गंभीर ने केवल फार्म भरा, दिल्ली के जनता ने उसको चुनाव जिता के लोकसभा में सांसद के रूप में भेज दिया। मैं राज्यसभा में देखती हूं, एक ट्राइबल परिवार की लड़की एमसी मैरी कॉम और राज्यसभा के सदस्य के रूप में चयनित होती है। अरे वो तो खिलाड़ी थी, कैसे पहुंची राज्यसभा? प्रेरणा देना कि एक खिलाड़ी खेल के मैदान से देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में भी जनता की भलाई और देश के विकास के लिए अपना समय दे सकती है। मेरी काम एक नहीं 10-10 बार उसने पुरस्कार जीते हैं। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र धोनी, ये ऐसे नाम जिनको सरकार ने पुरस्कारों से नवाजा, उनको सम्मान दिया। अभी तो केरल की एक बहन पीटी उषा, जिसे हम उड़न परी कहते हैं, उस उड़न परी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में सर्वोच्च सदन में बैठाया। एक ट्राइबल परिवार की लड़की मीराबाई चानू, आप उसको देखते होंगे कैसे वो स्वर्ण पदक जीत के लेकर आई। तो मैं आप सबको
इन सफल नामों को इसलिए गिना रही हूं, मैं आपको कहना चाह रही हूं कि आप सब एकलव्य मॉडल स्कूल में पढ़ाई करते हैं। उस स्कूल का नाम एकलव्य क्यों है? एकलव्य नाम के पीछे आप लोगों के लिए एक संदेश छुपा हुआ है। एकलव्य का मतलब है अनुशासन, दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन और मेहनत। वो द्वापर युग था जहां एक शिक्षक द्रोणाचार्य थे जो अपने गुरुकुल में राजकुमारों को शिक्षा देते थे। आज 4000 खिलाड़ी यहां पर आए हुए। आप सबके पीछे कई टीचर यहां आए, वो द्रोणाचार्य के रूप में है। तो मैं द्रोणाचार्य स्वरूप जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, मैं उन सब लोगों से अपील करती हूं कि आप केवल किताबी शिक्षा ही नहीं, बल्कि आज ये खेल का जो महाकुंभ विजयवाड़ा में प्रारंभ हुआ है, तो मैं चाहती हूं कि इसी में से कोई नीरज चोपड़ा निकले, कोई पीटी उषा निकले, कोई मैरी कॉम निकले, कोई मीराबाई चानू निकले। इसकी शुरुआत आपने कर दी है। भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में सरकार की बहुत सारी योजनाएं संचालित। खेलो इंडिया, फिट इंडिया, आप सबको फिट रहना बहुत जरूरी है। मैं सभी खिलाड़ियों से कहना चाह रही हूं कि आप लोग अपने जीवन में योग को जरूर अपनाएं, करो योग, रहो निरोगी। तो योग करना बहुत जरूरी है। ये शरीर एक मशीन है, इस मशीन को यदि स्वस्थ रखना है, इसमें ऊर्जा भरना है, इसमें ताजगी लानी है, इसको और निखारना है, तो आपको योग करना है और खेलना भी है। आप एकलव्य मॉडल स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। मैं कह सकती हूँ कि कहीं छोटी बिल्डिंग होगी पुराने समय की, कहीं किसी दूसरे भवन में आप पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग स्कूल के रूप में मिलेगी। 38 करोड़ रुपए की एक एक बिल्डिंग। और जब आप पढ़ाई के साथ खेल रहे हैं तो आपको एक नहीं 4 उसमें प्लेग्राउंड मिलने वाले हैं। 4। आज आप देखें, मानव संसाधन मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय का जो सेंट्रल स्कूल है, जवाहर नवोदय विद्यालय, वहां पर एक मैदान हो सकता है, 4 नहीं। लेकिन हमारे ट्राइबल बच्चों को जो एकलव्य मॉडल स्कूल में पढ़ाई करते हैं, आपको 4 प्लेग्राउंड मिल रहा है। 38 करोड़ की बिल्डिंग मिल रही है। और कितनी खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 740 स्कूलों की स्वीकृति हो चुकी है। 678 स्थानों पर हमारे स्कूल संचालित हैं। पहले स्कूलों में व्यवस्था के लिए कम राशि मिलती थी, लेकिन आज हमने उस राशि को बढ़ा दी है। पहले 42,000 रुपए एक स्टूडेंट के पीछे हम खर्च करते हैं, जिसे बढ़ाकर हमने 1,09,000 कर दिया है। ये बहुत बड़ा अमाउंट। हम पूरे देश भर में 32 लाख स्टूडेंट को डीबीटी के माध्यम से स्कॉलरशिप देते हैं। और आने वाले समय में स्कूल को और बेहतर बनाने के लिए जो हमारी नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति के अनुरूप और ज़्यादा सशक्त बनाएंगे। मैं हाँ इस बात को जरूर कहूँगी कि हमारे देश में पढ़ाई के साथ खेल को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिला है, लेकिन
उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप सबके लिए बहुत विशेष ध्यान दिया है। आज हमारे डिप्टी सीएम साहब ने आंध्र प्रदेश में जनजाति समाज के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और स्कूल के में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये सरकार जो स्कीम चलाती है उसके संबंध में बहुत सारी जानकारी उन्होंने दिया। ये आज़ादी का अमृत वर्ष है और इस आज़ादी के अमृत वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हमने देश के ऐसे ग्राम पंचायत जिसकी जनसंख्या 50% से अधिक जनजाति आबादी वाले हैं, उन गांवों को 100% विकसित करने के लिए शुरुआत कर दी है और उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम विकास योजना। आंध्र प्रदेश के 517 गांवों को हमने चयनित किया है और पहले किस्त के रूप में 20,39,000 रुपए हम देने जा रहे हैं और यहाँ की जो भी राशि है, यहाँ के प्रस्ताव के आधार पर हम समय समय पर हम इस प्रदेश को अपनी ओर से हमेशा मदद करते रहते हैं। अभी अभी आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति जी के हाथों हमारे बहुत सारे खिलाड़ी जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया, राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया, अन्य भी पुरस्कार हमारे खिलाड़ियों को मिला है। मैं हमारे एकलव्य मॉडल स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं से कहूंगी कि आप पढ़ाई के साथ साथ खेलों के तरफ भी ध्यान दें, खेल को भी अपना कैरियर जरूर बनाएं, क्योंकि अवसर की कोई कमी नहीं है और इसके लिए सरकार आपको पूरी मदद करेगी। खेलों का एक वातावरण हमारे इस देश में अभी बना हुआ है। मैं आप सबके लिए एक पंक्ति कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगी। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में जो टूटे वह संकल्प नहीं होता। हार को रखिए जीवन से दूर, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर हम चाह लें तो आकाश के तारे तोड़ सकते हैं, यदि हम चाह लें तो आकाश के तारे तोड़ सकते हैं, अगर हम चाह लें तो नदी के मुख को भी मोड़ सकते हैं। हमारे चाहने भर की देर है मित्रों, भारत के अध्याय में एक पन्ना और जोड़ सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आंध्र प्रदेश सरकार को मेजबानी करने के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। माननीय डिप्टी सीएम जी के प्रति अपनी धन्यवाद ज्ञापित करती हूं और नेक्स्ट के हमारे अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने इस आयोजन के लिए कड़ी मेहनत किया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। और यहाँ पर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बच्चों ने सबको खुश किया। आप सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय आंध्र प्रदेश। Thank you so much, madam. Thank you so much, अच्छा लगा। ma'am. Yes, that was an amazing speech. That was a very valuable speech. Can we have a big round of applause, ma'am के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। And I'd like to say, So, over to Asit Gopal ji from Government of India. We request you to kindly come forward and felicitate all our dignitaries on this So fantastic first- occasion. sir is felicitating our chief guest, Minister of State Tribal Affairs, Srimati Renuka Singh Saruta. Can we have a big round of applause, guys? Everybody, lovely. Thank you once so much, again, ma'am, for gracing this occasion.
We thank you from the bottom of our hearts for being here on this special occasion of ours. छत्तीसगढ़ से आप आए हो और इस beautiful event को और successful बना चुके हो. Thank you once again. And we are felicitating with a bouquet, shawl and memento. Lovely. On behalf of Andhra Pradesh. जोरदार तालियां हो जाए, come on यार. Third EMRS National Sports Meet 2022. A quick felicitation ceremony followed by vote of thanks. And we have Deputy CM TWAP Shri Pidika Rajana Durgarki felicitation jaragbotundi. So with a quick memento from the entire team of EMRS and shawl bouquet also. Lovely. సో ఇప్పుడు అసిత్ గోపాల్ గారు మన నెక్స్ట్ డిగ్నిటరీకి ఫెలిసిటేట్ చేయబోతున్నారు శ్రీమతి మాధవి, మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అరకు. హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ మేడం. మాధవి గారు, ఎంతో సంతోషం మీరు అరకు నుంచి రావడం. అండ్ ఉన్నప్పుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడానికి ఫ్రమ్ ద లాంగ్ వే అందరూ ట్రావెల్ చేసుకొని వచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఫెలిసిటేషన్ టు శ్రీమతి కళావతి గారు, ఎమ్మెల్యే పాలకొండ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. సో మనతో పాటు కళావతి గారు కూడా ఉన్నారు, మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ పాలకొండ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. నెక్స్ట్ sir is going to felicitate Shri Shiv Singh Meena, economic advisor. So our economic advisor is also